प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अभी 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 सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में बोला है कि प्लेसेस ऑफ डू नॉट ऑर्डर सर्वेस इन एनी न्यू रिलीजियस प्लेस, कि इस मस्जिद का सर्वे करो, इस श्राइन का सर्वे करो, whether it was these, a lot of these surveys were coming or these orders were coming from where, from the district courts and session courts etc. So those things have been prohibited by supreme court for now. Supreme court ने बोला है कि ये जो issue है that is pending in the supreme court, this law places of worship act 1991, whether it is constitutional or not, this is pending in the supreme court, and till that time do not go for it. तो थोड़ा सा ना समझते हैं इसको, places of worship act का थोड़ा background समझते हैं, then we'll come to understanding what is happening right. In 1991, देखो 1980s में ना ये अयोध्या मूवमेंट रिवाइव हुआ, and in 1991 अयोध्या मूवमेंट में the case was in supreme court. Case was in supreme court, but उस टाइम और भी चीजें हो रही थी. There were issues raised in Mathura, there were issues raised in Varanasi too, कि ये जो मॉस्क है ये पहले मंदिर हुआ करते थे या फिर ये मंदिर की जगह पे बने. These kind of issues were being raised, and that would have led to a lot of tension in society. कि 400 साल पहले किसी रूलर ने क्या किया कि वजह से the people should not be fighting today, people should not be hating each other today. We lived in a medieval world. वहां पे we were not living in a democracy, we were not living in a secular country, and that is why government said कि let us come up with a law which says कि यार अब 1947 में जिसका जो स्टेटस है ना उसे मानते हैं और आगे चलते हैं, but keep अयोध्या राम जन्मभूमि dispute out of it, because that was already in Supreme Court. So what was the purpose of Places of Worship Act 1991? Places of Worship Act 1991 prohibits conversion of any place of worship and provides for maintenance of religious character of any place of worship. Prohibits conversion of any place of worship. कि अभी कोई place of worship है, अगर वो temple है, अब Hindu place of worship है, it will not be converted, it will not be allowed to convert into Muslim place of worship or Christian place of worship. Similarly, कोई Muslim place of worship है, Christian place of worship है, it will not be converted into any other place of worship. So it prohibits conversion of any place of worship and provides for maintenance of religious character of any place of worship. That is, जो place of worship है उसका जो भी religious character है, वो Hindu place है, Christian place है, it will remain like that. Okay. As it existed on 15th August 1947. So though this law is of 1991, so in 1991 Parliament passed this law which says that no person shall convert any place of worship of any religion, of any religious denomination into one of different religious denomination or sect. Basically, एक place of worship cannot be converted into of another religious denomination. Uska religious character also cannot be changed. The character which was there on 15th of August 1947, that is something. उससे पहले जो भी हुआ, तो basically, I hope you understood the idea. जो मैंने पहले बात करी कि before 1947, we did not have the constitution on the basis of which we are working. If we'll keep fighting कि पहले ये जैन मंदिर था उसको तोड़ के टेम्पल बना दिया, पहले ये टेम्पल था उसको तोड़ के बुद्धिस्ट टेम्पल बना दिया, फिर इस्लाम आया उसने टेम्पल्स को तोड़ के मॉस्क बना दिया, तो अब सबको वापस कन्वर्ट करो, then it will create lots of problems in the society. And thus Places of Worship Act 1991 prohibited conversion and said that the religious character of places will be same as what was there on 15th of August 1947. Section 4.2 provides that all pending suits, appeals or other proceedings regarding the conversion of the character of place of worship will stand abated. That is, all the cases which are pending in the 1960s में, 70s में, 80s में cases file करे गए होंगे कि यार ये पहले टेम्पल था but अब मॉस्क बना हुआ है. Before 1947 it was a temple, or in 1600 and 1700 it was a temple, but now it's a mosque. तो ऐसे बहुत सारे cases भी pending थे
the law said that all cases are abated. Hence, जो उसका रिलीजियस कैरेक्टर 15th of August 1947 को था वही रिलीजियस कैरेक्टर माना जाएगा. एंड नो फ्रेश प्रोसीडिंग शैल बी फाइल्ड. नो फ्रेश प्रोसीडिंग शैल बी फाइल्ड मतलब कि अदर देन, आप देखोगे यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या दिया हुआ है. एक्सेप्शन में एक राम जन्मभूमि वाला पॉइंट दिया हुआ है कि राम जन्मभूमि वाला केस चल रहा है कोर्ट में, वो चलता रहेगा. अदर देन दैट नो अदर केस विल बी एडमिटेड फॉर कन्वर्जन पर्पस. डू वी गेट दिस? डू वी गेट दिस? डू अंडरस्टैंड दिस? इस पे क्लैरिटी है? तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेज रिलीजियस डिनोमिनेशन चेंज नहीं होगा, सॉरी कन्वर्जन नहीं होगा किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का. अभी हमने क्या पढ़ा था? एंटी कन्वर्जन लॉ. इंडिविजुअल विल नॉट कन्वर्ट द रिलीजन. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेज दैट religious place, no person shall convert any place of worship into of other religion. Uska religious character will remain same as that of the religious character which was there on 15th of August 1947. Section 4.2 provides that all the pending suits, all the pending cases related to that will be abated, and legal proceedings can be initiated with respect to the conversion of the religious character of any place of worship if the change of status took place after 15th of August. तो 1947 में जो सिचुएशन था वही मानेंगे. 1947 के बाद आपने किसी टेंपल को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया है तो उसके अगेंस्ट हो सकता है, बिकॉज 1947 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हो गए. अब वहां से नई शुरुआत हुई है. लेट अस बिगिन. तो all the pending cases go away, but not those cases which are about changes which happened after 1947. So let's say there was a temple in 1950, somehow it was converted into a mosque. उसके अगेंस्ट क्या हुआ है? केस फाइल. That case will still continue. Changes which have taken place after 1947 can, क्योंकि अब तो हम नई शुरुआत कर लिए ना, उसमें अगर कोई मुझे कन्वर्ट कर रहा है, मेरे प्लेस रिलीजियस प्लेस को कन्वर्ट कर रहा है, that's a problem, that's a concern. Now there were some exemptions provided. Exemptions कौन से? This act will not be applicable on ancient and historical monuments, any place of worship which is an ancient or historical monument or an archaeological site or remains covered by ancient monument and archaeological sites and remains act 1950. अगर इन तीनों में से कुछ भी satisfied हो रहा है, this act will not be applicable on them. Then the act will also not apply to any suit that has been finally settled or disposed of. That is cases जो पूरे settle कर चुके हैं, like cases were filed but cases have been settled now. Cases which are pending are abated, but cases which are settled, वो तो settle हो गया ना, उस पे ये applicable नहीं होगा. Are we getting it? Or those cases where mutual agreement से दो community ने decision ले लिया है, in those cases this act will not be applicable. But it also says that section 5 of the act particularly exempts Ram Janmabhoomi from its application. राम जन्मभूमि वाला जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसको हमने ये नहीं बोला कि अब ये बाबरी मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, 1947 में मस्जिद थी तो मस्जिद नहीं. दिस केस इज गोइंग ऑन एंड दिस केस विल बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. दैट वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ. तो लॉ क्या बोल रहा है? लॉ बोल रहा है कि यार 1947 में जो सिचुएशन था ना वही है, उसके बाद नहीं, अब लड़ना बंद करते हैं, अदरवाइज हम ये कन्वर्ट करते रहेंगे, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ tensions, animosity, and will be harmful for unity and integrity of the country. Please understand, I'm not justifying the law, I'm just telling you what the law is. Positive, negative, समझेंगे. What is the significance of the act? The act safeguards secularism and communal harmony in the country. That was the primary reason. अब इस act को some people also call it a very political act. They say that this was an attempt to subdue the rising BJP. BJP was rising, and it was rising on the demand of Ram Janmabhoomi, on the demand of converting various mosques back into temples, right? And तो उन्हें सबड्यू करने के लिए ये किया गया. जब आप इसके डिबेट में जाओगे तो वहां पे the people who are supporting it were also mentioning कि बीजेपी की राइज को थोड़ा कंट्रोल कर पाओगे, and people who are opposing it वर सेइंग कि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को आपने इग्नोर कर दिया. विल कम टू अभी हमने बस प्रोविजन समझा है. 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, उसने ये
बिल लेके आया, ये एक्ट बनाया. वी हैव जस्ट अंडरस्टूड द प्रोविजन एंड वी अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड द सिग्निफिकेंस कि हाँ, टू सम एक्सटेंट दिस कुड बी अंडरस्टूड कि यार यस, इन 1947 वी एन इंडिपेंडेंट इंडिया कम्स इनटू प्ले, और अब जो सिचुएशन है उसको ही आगे लेके चलते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं, rather than keeping continuing to fight on this was a temple, this was a mosque, this was a temple, this was a mosque, this was a church, this was a Jain temple, this was a Buddhist temple. These kind of things would not serve the purpose. This is what the government tried to. Let's understand why it is being challenged. पहले आ गया था जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो, इसके बाद डिमोलिश हो, जो उसको तोड़ा गया है इसके बाद. ओके, बट उसका इस एक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज दिस एक्ट हैड एनीवेज एग्जेम्प्टेड द राम जन्मभूमि क्वेश्चन. इट वाज ऑलरेडी इन द कोर्ट, है ना, वो तो एग्जेम्प्ट हो गया था. पर उस टाइम ना, अब ज्ञानवापी मॉस्क का भी इशू उठने लगा था, या मथुरा में भी इश्यूज उठने लगे थे. दिस वुड हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एनिमोसिटी, टेंशन, विच में हैव ऑल्सो लाइक, अब किसी ने 300 साल पहले, 400 साल पहले क्या किया, उसकी वजह से अभी लोग लड़ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं. दिस वाज द आइडिया, बट दिस हैज बीन चैलेंज्ड इन द on various grounds. The constitutionality of what has been challenged, Places of Worship Act, has been challenged. You will see first petition challenging the constitutional validity of the act was filed in October 2020, and subsequently, तो after Ram Janmabhoomi judgment के बाद 2019 में वो judgment आया, उसके बाद 2020 में ये एक बीजेपी लीडर ही है जिन्होंने चैलेंज किया. उसके बाद several other petitions were filed in the Supreme Court challenging the Places of Worship Act 1991. पहले, before we go to challenges, do we understand what is Places of Worship Act? Challenges क्या है? It takes away the power of judicial review. Power of judicial review is part of your basic structure. आप बोल रहे हो नहीं, कोर्ट्स में केसेस नहीं जाएंगे इससे रिलेटेड. Let judiciary decide by abating claims that existed at the time passing the law and by prohibiting fresh claims in the courts. It is taking away the power of judicial review, and thus may be violating of the constitution. Second, the act legitimizes historical forceful occupation of places of worship. Historically, देखो, we are not saying कि उसका punishment जो वहां पे हुआ उसका punishment आज किसी को देना है, but something that happened was wrong and we are kind of, चलो गलत हो गया तो हो गया, अब गलत चीज ही मान. That is something which is being a ground on which the law has been challenged. It forces indigenous community of Bharat to live with atrocities committed against them. Third, arbitrary and irrational cutoff date. Why 15th of August 1947? Why 15th of August 1947? It has nothing to do with religion. It has nothing to do with religion. 15. आपको अगर डेट कुछ फिक्स, तो the people who are challenging it in the court, they're saying कि fix a date of 1200 CE. दिल्ली सल्तनत नहीं बना था, दिल्ली सल्तनत का रूल नहीं आया था, या फिर मुगल्स ने रूल करना शुरू नहीं किया था. And let a place of worship be what it was in 1200 CE. Why exactly 1947? This date is arbitrary. Up, the court may say that this is not arbitrary because this is when India became independent. But I'm giving you arguments on this, on which this is being challenged in the court. Then you will say the petitioners have argued that destruction, occupation of the religious places of worship has taken place over a period of centuries, which has no nexus with the cutoff date of 15th of August 1947. Then discrimination को exception. यहाँ पे ना एक दूसरा argument दिया जा रहा है कि यार you're violating Article 14. Why are you violating Article 14? जो राम भक्त है उनको तो अब तुमने दे दिया कि तुम अपना केस लड़ लो. What about शिव भक्त? What about कृष्ण भक्त? राइट टू इक्वालिटी में तो मुझे मथुरा में मेरे टेम्पल की जगह मस्जिद बन गया, या बनारस में मेरे टेम्पल की जगह मस्जिद बन गया. मैं शिव भक्त हूं या मैं कृष्ण भक्त. In that sense, they also argue that it is also violating right to equality. So the law is violating Article 14 as it puts worshipper of one deity on a higher pedestal than other Hindus who worship other deities.
Then the act was also outside legislative competence of Lok Sabha. एक और मेजर आर्गुमेंट कि लोकसभा did not have the power, or the center did not have the power, central legislature did not have the power to pass this law. Why? Because state list में है, in 7th schedule, state list in the 7th schedule include pilgrimages other than pilgrimages to places out, pilgrimages and other than pilgrimages to places outside India. तो pilgrimage, अब एक टेम्पल क्या है, एक मॉस्क क्या है, वो एक प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है. वो सब किस लिस्ट में आ रहा है, उससे रिलेटेड मैटर किस लिस्ट में आ रहे हैं, स्टेट लिस्ट में. तो उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगी. Jaswant Singh, then BJP MP, had argued that if places of worship are not places of pilgrimages, then what else are they? He had also argued that since many places of worship are linked to burial and cremation sites, another subject in the state list, the bill encroached on the state's right. These are some of the criticisms on which, or these are some of the challenges on which it has been challenged, its constitutional validity has been challenged in the court. There are few more criticisms. एक criticism ये है कि all over the world there have been efforts made towards truth and reconciliation. तो all over the world, आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, you will see that the indigenous people there have suffered because of Europeans going there, and US maybe indigenous people have suffered because of again Europeans going there and creating problems. And in सारी जगह ना, there is a truth and reconciliation commission formed. This truth and reconciliation commission did two things. One, truth, कि सच क्या है, पहले वो identify, and then there will be measures taken to reconciliate the colonizers and the people who were suffering and people who suffered, or invaders and the indigenous people. आप इस लॉ के थ्रू क्या कर रहे हो, इस लॉ के थ्रू यू आर डूइंग रिकंसिलिएशन. बट वेयर इज द ट्रुथ? पहले ये तो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि वेदर ज्ञानवापी मॉस्क जो है वो सच में टेम्पल था या नहीं. उसके बाद रिकंसिलिएशन किया जाना चाहिए कि ओके फाइन, अब जो 1947 से पहले हो गया वो कर लेते हैं, मान लेते हैं. So all over the world, truth and reconciliation commissions have worked like this. Here you just want reconciliation without actually telling the truth, without actually telling everyone finding the truth. So finding truth is as important, is what is being raised as another major criticism of Places of Worship Act. Places of Worship Act एक तरह से reconciliation करा रहा है. ये समझ में आ रहा है कि यार अब लड़ते नहीं है, अब जो है ठीक है. 1947 के बाद जो सिनेरियो है, let's keep it as it is and move ahead. This is what Places of Worship Act is saying. It is going for reconciliation. But is that reconciliation possible without truth? Is it fair without knowing the truth? Is another criticism made against the 1991 Act, Places of Worship Act. बात समझ में आ रही है? पक्का? Okay. Now, there are some important Supreme Court verdicts related to this. Let us talk about it. Let us understand this. देखो, एक तो अयोध्या जजमेंट था 2019 में. अब अयोध्या जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट हैड प्रेज्ड द 1991 एक्ट. सुप्रीम कोर्ट, तो अयोध्या जजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है. वहां पे इट वाज नॉट अबाउट द 1991 एक्ट, बट इट हैड प्रेज्ड 1991 बाय सेइंग a 5-judge bench of Supreme Court had found that the 1991 Act spoke to our history and to the future of nation. In preserving the character of places of public worship, the Parliament has mandated in no uncertain term that history and its wrong shall not be used as instrument to oppress the present and future. History में जो गलतियां हुई है, जो wrongs हुए हैं, shall not be used to create problems in present. Shall not be used as instruments to oppress the present and future. वरना हम अभी भी लड़ते रह जाएंगे उन चीजों की वजह से. सुप्रीम कोर्ट काइंड ऑफ did what? Said कि 1991 Act is a good act in that sense. But then in 2022, अब देखो, what is the Places of Worship Act saying actually? आप देखोगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बोल रहा है कि यार what is not allowed, what is allowed, what is not allowed, conversion is not allowed.
किसी का जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो बदलेगा नहीं किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का, राइट? इट इज सेइंग दैट जो 1947 में उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर था, दैट विल बी द रिलीजियस कैरेक्टर दैट विल बी फॉलोड। ये समझ में आ रहा है? अब 2022 में जस्टिस चंद्रचूड़ सेड कि हाँ ठीक है, बट रिलीजियस कैरेक्टर क्या है वो तो डिटरमाइन किया जा सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद में क्यों, ज्ञानवापी मस्जिद में वाई सर्वे कुड हैपन, बिकॉज पीपल सेड कि देर इज हिंदू टेम्पल का कंपोनेंट देयर एंड अलाउ अस टू वर्शिप देयर। दैट इज उसका रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू भी है, ज्ञानवापी टेम्पल का रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू भी है, एंड दस सर्वे कुड बी अलाउड फॉर व्हाट रीजन, फॉर रीजन दैट उसका रिलीजियस कैरेक्टर आप बदल नहीं सकते, बट रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन तो कर सकते हो ना। पीपल आर सेइंग कि इट इज हिंदू टेम्पल, उसका रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू है अभी भी। देयर आर टेम्पल्स, देयर आर statues, there are other things which may be found there. Are we getting it? So let's come back to this. In May 2022, during the hearing on allowing of Gyanvapi Masjid in Varanasi, Justice D.Y. Chandrachud noted that ascertaining religious character of a place of worship was not barred by the act. Act has not prohibited कि आप किसी place का religious character ascertain नहीं कर सकते. Therefore, while religious character of a place of worship can be determined, it can't be converted. You can determine the religious character of a place of worship. You cannot convert that place of worship, but its religious character can be determined. And इसी वजह से अभी जितने भी वो आते हैं ना केसेस आ रहे हैं, वैसे तो the Places of Worship Act 1991 prohibited any change. तो जो भी केसेस आ रहे हैं ना उसके सर्वे करो to determine the religious character. In this way, that is made possible because Supreme Court Chief Justice of India himself said कि क्या religious character determine करने पे the act is not making any prohibition. Now you'll understand कि how these surveys are possible, why these surveys are possible. Getting it? आपको लगा वो, आपको ऐसे सोचोगे कि अब जब 1991 एक्ट है ही तो are all these surveys leading to violation of the act? So they are not leading to violation of the act because the act did not prohibit it prohibited conversion, it did not prohibit determining the religious character, and that can be determined by surveys. So therefore, while the religious character of a place of worship can be determined, it can't be converted. तो अब दिसंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं. While the challenges to Places of Worship Act was pending before the Supreme Court, several civil suits have emerged in lower courts contesting the character of prominent religious places. Character determine करा जा सकता है. Places of Worship Act is not prohibiting it, and those are the suits which are going to lower courts. It includes Ajmer Sharif Dargah in Rajasthan, Shahi Jama Masjid in UP Sambhal, जहाँ recently violation हुआ था जब सर्वे के लिए टीम गई. टीले वाली मस्जिद इन लखनऊ, ये टील वाली थोड़ा स्पेलिंग टीले वाली होना चाहिए शायद. द शमशी मस्जिद इन बदाऊं, अटाला मस्जिद इन जौनपुर. There are some older cases also जैसे ज्ञानवापी मॉस्क इन वाराणसी एंड शाही दरगाह इन मथुरा. जितने सारे केसेस थे, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सिंस द मैटर इज सब जुडिस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, उस पर बहुत सारे पेटिशंस वी हैव, द मैटर इज सब जुडिस. इट हैज बार्ड सिविल कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम रजिस्टरिंग फ्रेश सूट्स चैलेंजिंग ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप. कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई भी मॉस्क, टेम्पल, चर्च, कोई भी है अभी, फॉर नाउ do not do what? Do not register fresh suits challenging ownership and title of any place of worship, and from ordering surveys of disputed religious places. Court should also not order surveys. जैसे अभी संभल में सर्वे ऑर्डर हो गया था, ऐसे those surveys should also not be ordered by the court until further orders. It also said जो पेंडिंग केसेस है, एक तो और पेंडिंग केसेस भी ना कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में ऑलरेडी केसेस होंगे. इन पेंडिंग केसेस कोर्ट्स वुड नॉट पास एनी इफेक्टिव इंटरिम ऑर्डर टू.
दैट इज पेंडिंग केस में कोर्ट बोल दे, कोई सेशन कोर्ट बोल दे, अच्छा आई हैव सर्वे का डेटा, नया सर्वे नहीं कर सकते पर पुराने सर्वे का डेटा तो है ना, नया केस फाइल नहीं हो सकता बट पुराना केस तो चल ही रहा है ना. एज पर दिस इट सीम्स दैट दिस इज अ टेम्पल. इसका इसका ट्रू कैरेक्टर क्या है? टेम्पल वाला है. These kind of orders also cannot be passed in pending cases for now. So in pending suits also, courts would not pass any effective interim order or final order, including orders of survey, till the next date of hearing. This is what Supreme Court said recently. I think 12th of December को ये judgment आया था. तो what is the way forward then? What is the way forward here? पहला way forward है, Supreme Court should clarify on the constitutionality and applicability of Places of Worship Act 1990. इवेंचुअली मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट भैया दे दो अपना वर्डिक्ट, है ना. यू आर द बेस्ट टू डिटरमाइन वेदर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, वेदर 1947 वाला जो डेट है दैट इज आर्बिट्ररी और नॉट. इवेंचुअली द डिसीजन विल बी ऑफ सुप्रीम कोर्ट. लेट इट डिसाइड इट एंड इट शुड डू इट. सेकंड, क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ द जुडिशियल लिमिट ऑफ द लोअर कोर्ट्स. लोअर कोर्ट्स ना कैन इजीली be influenced by political reasons or other reasons also. They may have more bias, and thus they giving judgments on sensitive religious matter sometimes may become problematic. तो एक और चीज जो हमें करनी है कि should there be any restriction put on the order of surveys etc being given by lower court? Should it be then कि नहीं ये सारी चीजें हाई कोर्ट ही कर सकता है, so that those matters are taken more seriously rather than any district court or session court giving those kind of judgment. And finally, we have to prioritize social harmony and unity. While it's important to identify the religious characteristic of a place, it's important कि हम ये identify करें while keeping in mind social harmony and unity from all communities. अगर सपोज किसी प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर निकल रहा है कि नहीं यार वहां पे टेम्पल था, ये चीजें थी, बोथ द कम्युनिटी शुड कम टुगेदर एंड डिसाइड कि किस तरीके से वहां पे टेम्पल रिलेटेड वर्क कैन ऑल्सो हैपन, वहां पे मॉस्क रिलेटेड थिंग्स कैन ऑल्सो हैपन, है ना. एंड दैट वुड ओनली हैपन व्हेन वी डीपोलिटिसाइज द लीगल केसेस. अगर पॉलिटिकल पार्टीज फाइल कर रही है, उनका पर्पस है पॉलिटिक्स के लिए मोबिलाइज करना ऑन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑल, इट विल कीप क्रिएटिंग टेंशंस, इट विल कीप क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करना वुड बी वेरी क्रूशियल. अदरवाइज द टेंशंस वुड कीप गोइंग अप एंड वी विल मूव इन अ रॉन्ग डायरेक्शन. It will hamper unity and integrity of the country negatively. So while Supreme Court judgment दे देगा, that's fine. उससे हमें पता लग जाएगा कि Places of Worship Act is right or not. But we have to take measures towards promoting social harmony, towards towards removing religion from politics. Else, we will not be progressing properly. हम गवर्नमेंट से पूछेंगे कि यार एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट बोल देगी ये रिलीजन खतरे में. हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछेंगे कि यार इतने बच्चे हॉस्पिटल में जल के मर गए, आप हॉस्पिटल की कंडीशन सुधार क्यों नहीं रहे, अगले दिन न्यूज आ जाएगी हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, क्रिश्चियन खतरे में है. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सोशल हार्मनी इंश्योर करवाना और पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट करना. Politicians not fighting on the ground of religion and all. अब वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा सोचो. Again, yes, that was the purpose of the act, and that is why let us hope कि Supreme Court जो कर, it will take a call कि whether it should be struck down or not. हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है. If उनके सेन माइंड से उन्हें लगता है कि दिस एक्ट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, इट मे स्ट्राइक डाउन द एक्ट. इफ इट थिंक्स कि नहीं दिस एक्ट इज क्रूशियल टू इंश्योर कि फंडामेंटल राइट्स भी प्रोटेक्टेड हो और सोसाइटी में पीस हार्मनी रहे, इट विल टेक दैट कॉल. तो वही हमने वे फॉर्मूले में क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट
should finally give its judgment, and then other aspects.